अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मेम्ब्रेन टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आरओ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस, सी वाटर डिसैलिनेशन, किसी भी प्लांट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेम्ब्रेन की कई किस्में हो सकती हैं, लेकिन आज हम जो जिक्र करेंगे तो वो मेम्ब्रेन का जो टाइप है वो स्ट्रक्चर या शेप के लिहाज से इसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ मेम्ब्रेन। Membrane configurations vary, but today we will discuss classification according to its shape and structure. First, hollow fiber membranes. The hollow fiber membrane is a separation membrane shaped like a thin straw. A hollow fiber membrane is a filtration device that utilizes a physical barrier mechanism to separate impurities from any fluids channeled through it. The main component within the device are hollow tubes with minute pores that permit the entry of water molecules but keep out larger organic or inorganic contaminants, particles, bacteria, etc. A hollow fiber membrane is a collection of hollow tubes that contains micropores, making them selectively permeable to fluids like water. When a stream of contaminated fluid is channeled over the exterior of the tube, contaminants such as virus, bacteria, and cysts are retained outside their lumen, while clean fluid will filter through the micropores, thus achieving separation. Standard version of hollow fiber membrane are fitted with pore openings of 0.2 microns, while membranes with pore size as tiny as 0.01 microns also available. यानी hollow fiber membranes जो है ये थिन स्ट्रा की तरह होते हैं और इसको एक केसिंग में इकट्ठा करके इससे फ्लूइड, किसी भी किस्म का फ्लूइड गुजारा जाता है, यानी वाटर वगैरह गुजारा जाता है, और इम्प्यूरिटीज जो है उसके एक साइड पर रह जाते हैं और जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो इनसे गुजर जाते हैं। और इसका जो पोर साइज है वो अबाउट 0.2 माइक्रोन्स है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है फ्लैट शीट मेम्ब्रेन। FS आर फ्लैट शीट membranes are one of the three types of membranes technology configuration. FS membranes have planar configuration and are predominantly rectangular. They are designed to be immersed in the membrane tank and scored with air to maintain the flow of sludge through the membrane channel. इन FS membrane जो है ये रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं और इसकी एक तरफ से फ्लो जो है वो गुजारा जाता है और दूसरी तरफ पे ये साफ पानी जो है वो इसके दूसरी तरफ से गुजर के फिल्टर हो जाता है और फिर इसको एयर स्कोरिंग करनी पड़ती है इसको साफ करने के लिए, ताकि स्लज को मेम्ब्रेन के एक साइड से हटा दिया जाए। तीसरे नंबर पे हमारे पास है प्लेट्स एंड फ्रेम्स। These membranes are placed inside a carrier plate in a plate-like structure that collects solids. यानी एक plate-like structure में इसको collect किया जाता है इस membrane को और इनमें से permeate जो है water जो है वो गुजार के permeate हासिल किया जाता है। They have a low packing density and may be less efficient than other filtration methods, but they are generally easier to use and easier to clean. Usually used for solutions that are difficult to filter. Number 4, Spiralwound. Spiralwound membranes are among the commonly used. They are composed of plate sheets of membranes between mesh-like spacers that are wound around a central tube called permeate tube. This tube collects the permeate after filtration and placed within a casing. They are relatively compact and can be used in high volume applications with low suspended solids. Spiral wound membrane जो है ये normally RO सिस्टम पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सी वाटर और ब्रैकिश वाटर, वेल वाटर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो RO सिस्टम में हमारे पास मेम्ब्रेन इस्तेमाल होते हैं वो स्पाइरल बाउंड मेम्ब्रेन होते हैं। नंबर 5, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स।
Tubular membrane modules are tube-like structure with pores walls. Tubular modules work through tangential cross flow and are generally used to process difficult feed streams such as those the high dissolved solids, high suspended solids, and or oil, greases, are fed. Tubular modules consist of a minimum of two tubes, the inner tube called the membrane tube and the outer tube which is the shell. The feed stream goes across the length of the membrane tube and is filtered out into the outer shell while concentrate collect at the opposite end of the membrane tube. They are commonly used for applications such as oily wastewater treatment, MBR and other high solids processes. यानी इसमें मिनिमम दो किस्म की ट्यूब हो सकते हैं। वैसे एक शेल में ज्यादा ट्यूब भी हो सकते हैं, लेकिन एक कलेक्टिव ट्यूब है जो आउटर शेल है और इसके अंदर एक मेम्ब्रेन ट्यूब होता है। पानी को मेम्ब्रेन ट्यूब से गुजारा जाता है और वो फिल्टर होके आउटर शेल में इकट्ठा होके उसके परमेट हासिल किया जाता है। तो ये थे हमारे पास 5 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर वाइज मेम्ब्रेन के अक़साम। इसके अलावा हमारे पास जो फिल्ट्रेशन के लिहाज से और भी कई किस्में हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मजीद इस किस्म की अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम।